माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन विविधि श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताई गोपीमानंदे हरि बोल।
ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Hare Krishna. So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, The Lord in the Heart, and verse number 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ekaikashogani dhyanubhavaye. Ekaikashogani dhyanubhavaye. Padadiyavat dhashitam gadabhrita. Padadiyavat dhashitam gadabhrita. Jitam jitam sthanam apoyadharaye. Jitam jitam sthanam apoyadharaye. Param param suddhyati dhir yatha yatha. Param param suddhyati dhir yatha yatha. Ekaikashogani dhiya anubhavaye. Padadiyavadhashitam gadabhrita. Jitam jitam sthanam apoyadharaye. Param param suddhyati dhir yatha yatha. Ekaikasho angani dhyanubhavaye. Padadiyavadhashitam gadabhrita. Jitam jitam sthanam apoyadharaye. Param param suddhyati dhir yatha yatha. Ekaikasho angani dhyanubhavaye. Padadiyavadhashitam gadabhrita. Jitam jitam sthanam apoyadharaye. Param param suddhyati dhir yatha yatha. Ekaikasho angani dhyanubhavaye. Padadiyavadhashitam gadabhrita. Jitam jitam sthanam apoyadharaye. Param param suddhyati dhir yatha yatha. Ekaikasho angani dhyanubhavaye. Padadiyavadhashitam gadabhrita. Jitam jitam sthanam apoyadharaye.
param param sudhyati dhira yatha yatha. Eka ekasha, one to one, or one after another. Angani, limbs. Dhiya, by attention. Anubhavayet, meditate upon. Pada adi, legs, etc. Yavat, until. Hasitam, smiling. Gada bhrita, the personality of Godhead. Jitam jitam, gradually controlling the mind. Sthanam, place. Apoya, leaving. Dharayet, meditate upon. Param param, higher and higher. Sudhyati, purified. Dhi, intelligence. Yatha yatha, as much as. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to His smiling face. The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified. Purport. The process of meditation recommended in the Srimad Bhagavatam is not to fix one's attention on something impersonal or void. The meditation should concentrate on the person of the Supreme Godhead, either in His Virat Roop, the gigantic universal form, or in His Sachidananda Vigraha as described in the scriptures. There are authorized descriptions of Vishnu forms, and there are authorized representations of the deities in the temples. Thus one can practice meditating upon the deity, concentrating his mind on the lotus feet of the Lord and gradually rising higher and higher up to His smiling face. According to the Bhagavat school, the Lord's rasa dancing is the smiling face of the Lord. Since it is recommended in this verse that one should gradually progress from the lotus feet up to the smiling face, we shall not jump at once to understand the Lord's pastimes in the rasa dance. It is better to practice concentrating our attention by offering flowers and tulasi to the lotus feet of the Lord. In this way, we gradually become purified by the archana process. We dress the Lord, bathe Him, etc., and all these transcendental activities help us purify our existence. When we reach the higher standard of purification, if we see the smiling face of the Lord or hear the rasa dance pastimes of the Lord, then we can relish His activities. In the Srimad Bhagavatam, therefore, the rasa dance pastimes are delineated in the 10th canto, chapters 29 to 34. The more one concentrates on the transcendental form of the Lord, either on the lotus feet, the calves, the thighs, or the chest, the more one becomes purified. In this verse, it is clearly stated, the more the intelligence becomes purified, which means the more one becomes detached from sense gratification. Our intelligence in the present conditioned state of life is impure due to being engaged in sense gratification. The result of meditation on the transcendental form of the Lord will be manifested by one's detachment from sense gratification. Therefore, the ultimate purpose of meditation is purification of one's intelligence. Those who are too engrossed in sense gratification cannot be allowed to participate in archana or to touch the transcendental form of the Radha, Krishna or Vishnu deities.
For them it is better to meditate upon the gigantic Virat Roop of the Lord, as recommended in the next verse. The impersonalist and the voidist are therefore recommended to meditate upon the universal form of the Lord, whereas the devotees are recommended to meditate on the deity worship in the temple. Because the impersonalists and the voidists are not sufficiently purified in their spiritual activities, Archana is not meant for them. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Tamal Krishna Goswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So the process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to His smiling face. The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified. So very nice verse being spoken to परीक्षित महाराज. यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब कर रहे हैं. एकाकी कसो अंगानी धिया अनुभावयेत. तो प्रोसेस क्या है मेडिटेशन का, भगवान का स्मरण करने का प्रोसेस क्या है, तो बताया गया है. देखिए आप प्रॉपर्ट हम लोग देखते हैं तो प्रॉपर जी ये वर्स का कॉन्टेक्स्ट सही कर देते हैं ना, क्योंकि चैप्टर है द लॉर्ड इन द हार्ट. तो ज़्यादा लोग ये प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन जब सुनते हैं तो उनका समझ यही आता है कि ध्यान करना. वो जाके व्यक्ति ध्यान में यम नियम आसन ये करके ध्यान में बैठ जाता है. ध्यान में फिर परमात्मा के चरण से ऐसे ऊपर देखता है. लेकिन प्रभुपाद जी हम लोग को डायरेक्ट भक्ति का प्रोसेस में इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पहले भगवान के कमल चरण के ध्यान होना चाहिए. स्टार्ट सर्विंग. चैतन्य महाप्रभु तभी हम लोग के दिया है कि वी स्टार्ट सर्विस बाय मिनियल सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर. मिनियल मतलब नीचे होगा. तो कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा पैर नीचे होगा, तो इसीलिए प्रणाम भी करते हैं तो पैर पर करते हैं. तो भगवान के लोटस फीट जो है वो बहुत पावरफुल है. एंड देन बताया गया फिर देन प्रोग्रेस टू हिज स्माइलिंग फेस. सो अगेन द पॉइंट इज कि हम लोग को प्रोग्रेस करना है. वी डोंट बिकम स्टैग्नेंट ना. प्रोग्रेस कहाँ करना है, लोटस फीट से लेकर स्माइलिंग फेस तक. तो ये लाइफ में मुझे याद आ गया, प्रभुपाद जी बोलते हैं इन दिस लाइफ टाइम वी मस्ट गो बैक होम बैक टू गॉड. तो मतलब आपके पास जितना भी समय है, अवधि जितना है, यू मस्ट प्लान. जैसे एक डे होता है ना, तो हम लोग काम पे जाते हैं तो डायरी प्लान करते हैं कि इतना बजे से इतना बजे ये करेंगे तो हमारा सब काम है अटेंड हो जाएगा. तो हम लोग के अपन लाइफ के 50, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, या तो जब से कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुटे हैं, जब से ज्ञान हुआ है, उससे कैलकुलेट करो रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है. तो उसके आधार पे यू मस्ट क्रिएट सम प्लान कि दिस इज हाउ आई वांट टू प्रोग्रेस ना. इफ यू हैव चिल्ड्रन इन हाउ डू यू वांट टू सेट देम अप एंड देन यू वांट टू अल्टीमेटली सबको अपन बारे में सोचना है. यू कांट बी स्टक विद द वर्ल्ड लाइक दैट. तो वी मस्ट मेक. तो मेडिटेशन शुड बी बोला, द मेडिटेशन शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द लोटस फीट. तो अगेन ये चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी है जो विनम्र भाव से ह्यूमिलिटी में मुझे गोस्वामी लोग बताया, मुझे गोस्वामी लोग समझाया ना. गोस्वामी लोग बताया श्री चैतन्य मनोभिस्तम स्थापितम ये न भूतले. वो चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ गए, गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ गए. तो उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया कि ग्रंथ स्थापित करो, प्रैक्टिस ऑफ वैष्णविज्म एस्टेब्लिश करो, देन द गोस्वामीज रोट सो मेनी बुक्स टू एस्टेब्लिश दैट. और जो लोग गोस्वामी लोगों के बायोग्राफी पढ़ा है, आप देखेंगे उसमें ये भी वर्णन आता है द गोस्वामीज ऑल्सो रोट बुक्स विच वेर वेरी डीप एंड हाईएस्ट इनटू कृष्ण's pastimes. तो एक्चुअली में आफ्टर द गोस्वामीज लेफ्ट, some of those very deep books they were given Grantha Samadhi, because really in this world, these times, people are not purified enough to probably accept into that.
ये तो क्या होगा, व्यक्ति प्री मैच्योरली राधा कृष्णा पास्ट टाइम्स में एंटर हो जाता है। आप लोग देखते हैं कभी कहीं भागवत प्रोफेशनल रिसाइटर्स करते हैं, भागवत करते हैं, तो फिर सब लोग गोपी बन के डांस करते हैं, गरबा करते हैं, ये करते हैं ना। सो दे एवरीवन वांट्स टू एंटर इनटू द पास्ट टाइम, दे वांट टू गो इनटू। बट यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं या सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन शुड बी लोटस फीट। कमल चरण का कंसंट्रेशन मतलब अगेन इट मीन्स जो चैतन्य महाप्रभु हम लोग को दिया, जो बेसिक्स हम लोग को दिया है, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मूर्ति सेवा, मथुरावास। तो प्यूरिफाइंग द एग्जिस्टेंस इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। वंस यू आर प्यूरिफाइड, once you are pure like Narad Muni, then you can travel anywhere. Narad ji can go to the spiritual world as well in the very same body. So concentration should be on the lotus feet, and then you make gradual progress. The more the mind becomes fixed upon the different part, हम लोग को देखना है कि the more the mind becomes fixed. अब बहुत सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना। हम वो देखते हैं, हम वो चैंटिंग करते हैं तो माइंड में प्लेन बनने लगता है, आज क्या कुकिंग करना है। चैंटिंग करते हैं, माइंड में प्लेन बनने लगता है, आज मुझको ये करना है, मुझे वहाँ जाके पेमेंट कलेक्ट करना है, वहाँ जाके जॉब देखना है, ये माइंड में चलता है। माइंड को फिक्स करना है। आई थिंक राधानाथ स्वामी महाराज कोई प्रवचन करा तो महाराज बोले, जपा टाइम इज अ पर्सनल टाइम विद कृष्ण। जैसे हम लोग कोई अपॉइंटमेंट मिला था ना, उसके साथ में जाके अपना व्यक्तिगत बात शेयर कर सकते हैं। या तो कभी कभी आजकल के ज़माने में ऐसे होता है, वो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो जाना पड़ता है, कॉफ़ी पे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, बैठ के थोड़ा, अगर चुप्पे भी बैठा रहो कोई बात नहीं, लेकिन स्पेंडिंग दैट क्वालिटी टाइम विद इट स्ट्रेंथन्स द रिलेशनशिप। तो हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ में जपा टाइम इज दैट क्वालिटी टाइम। Bhagavatam time is that quality time with Krishna. Here when we are reading Bhagavatam, so we are all sitting with Krishna and they are talking about Krishna, what Krishna does, and these discussions increase the depth of love for Krishna. You start loving Krishna more. हम लोग संसार में भी देखते हैं, दो पीपल फ्रेंड बन जाते हैं, they spend time together, फिर पीते हैं साथ में, खाते हैं साथ में, घूमते हैं साथ में, तो अटैचमेंट बढ़ जाता है। जब अटैचमेंट बढ़ जाता है तो फिर हम लोग हैंका करते हैं, वी जस्ट वेटिंग फॉर फ्राइडे नाइट इवनिंग टू कम सो दैट वी कैन गो पार्टी टुगेदर ना, लाइक दैट। तो कृष्ण से तो हम लोग जब माइंड फिक्स्ड होगा, द मोर द माइंड बिकम्स फिक्स्ड अपॉन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्स वन आफ्टर अनदर। हम ऐसे भी नहीं कि ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस है या भगवान का रूप है, हम लोग ऐसे क्या कहते हैं इसको, कैसे हम लोग घप से ऐसे सब पूरा लील लेंगे जैसे भोजन होता है ना, ऐसे पूरा के पूरा बाइट मार लो, कोई शेयर नहीं करे मांगो बाइट मार लो, नहीं, इट हैज टू बी वन आफ्टर अनदर। तो प्रभु जी कितना सुंदर से दिया है। प्रभु जी हमको मंगल आरती का टाइम दिया है, जप का टाइम दिया है, भागवत क्लास का टाइम दिया है। और the other day I was listening to Haladhar Swami Maharaj. So Maharaj said the Goswami is also, I think Sanatan Goswami and Rupa Goswami, they were discussing. तो ऐसा बोला कि क्योंकि हम लोग कंडीशन स्टेट में हैं, तो हम लोग के अपन कंडीशन एंगेजमेंट जो है उसको यूज करके ही स्पिरिचुअल अपलिफ्ट में प्लेस होना है। अब इसमें कंडीशनिंग हम लोग के भोजन करने का कंडीशनिंग है। वी हैव द कंडीशनिंग टू ईट। हम लोग के हंगा आ जाता है, तो वी नीड टू ईट। तो ईटिंग को हम लोग नेगेट नहीं कर सकते कि ना नहीं खाएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं खाएंगे। ईटिंग होगा लेकिन कृष्ण प्रसाद होगा। हम लोग बात करने का नेगेट नहीं कर सकते कि ओके आई विल टेक मौन व्रत, आई विल नॉट स्पीक। वी विल स्पीक, बट वी विल स्पीक अबाउट सर्विंग कृष्णा, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, expanding the compassion and mercy of Krishna. That's the plan. That's what we want to do. वो दुनिया में सब लोग बोले कि come for a meeting. मीटिंग में क्या करेंगे हम लोग? स्पिरिचुअल मीटिंग मतलब how do we increase Krishna consciousness? How do we better ourselves and how do we better others? That's Krishna's plan. कृष्ण के प्लान ये। तो हम लोग के the more the intelligence becomes purified. तो इंटेलिजेंस हम लोग के प्यूरिफाइड होता है। तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैं सोच रहा कि प्रभुपाद जी देखो सबसे फर्स्ट प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट प्यूरिफिकेशन के बात है कि हम लोग के
भागवतम बताता है टू नॉट फिक्स वंस अटेंशन ऑन समथिंग इम्पर्सनल और वोइड। सबसे पहला प्रॉब्लम संसार के है कि हम लोग भगवान को मानते नहीं हैं। पहले तो इम्पर्सनली सो वोइडिज्म, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग करता धरता है। कोई बोलता है बिग बैंग से हो गया है, कोई बोलता है हम लोग बंदर से आ गए हैं, कोई क्या क्या सब साइंटिफिक थीरीज बना के रखे। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में भी, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में द मोस्ट पोटेंट वर्ड्स आर, ऑफ कोर्स व्हेन वी से नमामि विष्णुपदाय, सो वी ऑफर रिस्पेक्टफुल obeisances टू A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is very dear to Krishna, having taken shelter at the feet of Krishna. Why is he dear? Because he has taken shelter of Krishna. Now how he has taken shelter of Krishna? Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. He is teaching the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. What is the Chaitanya Mahaprabhu's message? Nirvishesha Shunyavadi. He is defeating the Nirvishesha Shunyavadi. वैसे प्रभुपाद जी first बोला, the process of meditation recommended in Srimad Bhagavatam is not fix one's attention on something impersonal. The meditation should concentrate on the person of the Supreme God. कुछ object होना चाहिए, you meditate on it. कोई व्यक्ति गाड़ी चाहता है तो देखता है उसको, then फिर उसको meditate करता है, I want to acquire this, I want to acquire this, I want to acquire this. Jewelry देखता है, I want to acquire this. वो प्रसादम भी देखता है, want to get the paneer by hook or crook. तो meditation, तो personal form चाहिए, personal form चाहिए. So that's meditation. Nirvishesha, how can you just look at up the ceiling and you say, I'm meditating? What? I can see the hanging light, I can see the beams, I can see the ceiling, I can see the exit light, So what really do I meditate on? What am I focusing on? There's so many. तो दुनिया में ऐसे फोकस करने की कोशिश, तब से पहले वाला चैप्टर में बताया कि अगर विराट रूप के भी, but then in Virat Rup also we are going to see Krishna's various presence in various forms. कृष्ण के rivers है, trees है, भगवान के, तो then we are again then putting a form. We are again putting a form. So thus one can practice meditating upon the deities. तो कभी ऐसे कोई बोलता है कि मुझ डीटी, तो कोई बाहर के लोग बोलेंगे डीटी वर्शिप इज आइडल वर्शिप. नो, इट्स नॉट आइडल वर्शिप, इट इज ऑथोराइज्ड वर्शिप. अगेन यहाँ पे स्क्रिप्चर में दिया गया है, फॉर मेडिटेशन यू नीड अ फॉर्म, एंड फॉर दैट फॉर्म द डीटीज आर द स्पिरिचुअल फॉर्म्स ऑफ कृष्ण. डीटीज मन गणत नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं so many temples we have, but people make deities out of their own concoction. Then sometimes you think, you come to the Hare Krishna temple, you look at the beauty of Krishna. I'm sure everyone can get attracted. Even children will get attracted by the deities. But some places, you go, the deities are presented in a very ghastly manner. Then how do we expect the living entity or even the children to become attracted? It's kind of scary. And those are the situations that create opportunity for the non-devotees, for the impersonalists, and for the voidists to make a claim that deity worship is idol worship. These are the presentations. This is, in fact, these are the faults of, if you can say, our so-called Sanatana Dharma, that we don't present Krishna as powerfully as Prabhupada has done, that Krishna is a person. You can interact with Krishna. Here we are interacting with Krishna. We are worshipping Him, we are dressing Him, we are offering flowers to Krishna, we are making garlands for Krishna, making deity dresses, that's all very personal. It's very, very personal. So according to the Bhagavad school at the Lord's, so then it says, the Lord's rasa dancing is the smiling face of the Lord. So since it is recommended in this verse that we gradually progress from lotus feet to the smiling face, we should not jump. तो हम लोग जंप नहीं कर सकते. जैसे लास्ट वर्स में प्रभुपाद, लास्ट पैराग्राफ में बोला प्रभुपाद जी, लास्ट सेंटेंस में, because the impersonalists and voidies are not sufficiently purified, their spiritual activities, in their spiritual activity, they also do some spiritual activities, but in their spiritual activities, archana is not meant for them. So deity worship, personal service is not meant for them. So in essence, the whole purport in the verse, whilst it's talking about beginning of meditation from the feet to the smiling face of the Lord, this achievement is only possible when there is purification. So that's why Prabhupada is focusing in the purport, giving the process of
purification. So purification, of course, chanting is one of all the process that Chaitanya Mahaprabhu had. Actually, there are 64 limbs of devotional service. But Chaitanya Mahaprabhu says that if one does only 5 principal activities, then all the 64 items are covered. Another point in Nectar Devotion, Prabhupada says, Prabhupada says, when you do the morning program, your Mangala Arti, your morning sadhana program, actually that also gets all the 64 items of devotional service covered. And what should happen? What should happen in the purification process? The purification process must purify the intelligence. Must purify the intelligence. Purify the intelligence means the intelligence is so fixed, established and strong that when the mind throws the idea that let's do some sense gratification, the intelligence is able to control it. When the mind says that I am the doer, the intelligence is able to guide and convince the mind that actually Krishna is the Supreme Personality. The Bhagavad Gita verse, it says, Janma karma chame divyam yoam veti tattvataha. So knowing Krishna by his transcendental nature. How do you understand Krishna by the transcendental nature that we need to understand of Krishna is that Krishna is supreme. Krishna is the maintainer. Krishna is the protector. That's one of the 6 points of surrender is that these are the first things. Krishna is protector, Krishna is maintainer. Then we become dependent on Krishna. Purified intelligence means fully understanding that Krishna is supreme and we are to be dependent on Krishna. That's purified intelligence. Otherwise somebody can say, some very, very learned Jnani and Dhyani, they also understand Krishna is the supreme. But there is no application to it. A Jnani might think, Krishna has given us intelligence and Krishna, everything comes from Krishna, yet you have sometimes you don't understand Krishna's interest. Then you justify saying, no, Krishna has given us intelligence, so we must use our intelligence as well. Actually, you are not using your intelligence. You have been overcome by your mind. The mind's continuous and forever attempt is to run away. माइंड के काम है केवल भागो. तो अभी हम लोग बैठा है यहाँ पे हम भागो, अभी हम सबके माइंड में समझ में आवे है कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. जैसे हम लोग अभी थोड़ा समय जाइए, हम लोग कोई काम पे जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, माइंड के जैसे एकदम माइंड इज जस्ट लाइक बलून है. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अ लिटिल प्रिक एंड द बलून गोस. माइंड वही रखा है, उसके लिए होते नहीं प्रिक की जरूरत है. द माइंड विल इमीडिएटली से आई एम द डूअर. तो इंटेलिजेंस प्यूरिफाई करेगा. तो प्रभुपाद जी बोला, फिर प्रभुपाद जी अलग अलग मेजरमेंट भी देते हैं कि एंड अगेन लाइक ऑलवेज व्हेन यू आर डिस्कसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, द होल भागवतम इज लाइक बीइंग स्पोकन टू Parikshit Maharaj. So this Bhagavatam, when we are reading, Prabhupada is speaking to us. Consider it that way. We don't judge others on this basis. So here it says, in this verse, it is clearly stated, the more the intelligence becomes purified, which means the more one becomes detached from sense gratification. The more you become detached from sense gratification. That is why devotees, they do tapasya. We do Ekadashi, is tapasya, is controlling the sense of eating. We are chanting, controlling the mind. We are serving. Sometimes the mind does not like to serve. I think all of you will agree. We all have accepted. We all have served. And sometimes the mind says, why should I? Why shouldn't she do it? Why shouldn't he do it? But we must always know that serving the lotus feet of the Lord is purifying. So who are we trying to purify? I'm trying to purify myself. I'm trying to purify myself. Just like in India when it's cold season. So what happens, the wife in the house, she still wakes up in the morning to cook food for the family. So while she's cooking food,
she's by the stove, she's by the chulha. So whilst everyone is sort of wrapped up in the warm clothes in the winter, because she is near the stove, cooking, doing service for the family, she is actually deriving the warmth from it. So when we try to keep ourselves, that's why Prabhupada said the potency of a preacher, the potency of a pure devotee is in the purity. That's why Prabhupada said purity is the force. Purity is the force. Books are the basis. Why is the books the basis? Because reading the books, hearing the class, or hearing devotees, pure devotees speak, it continues to sort of slap the mind into position. Just like जो फार्मिंग किया है वो जानता है, जो किसानी किया है, वो जब आप खेत को कल्टीवेट करते हो तो वो कभी कभी वो जो बैल से खेत जोतते हैं उसको चाबुक मारना पड़ता है, क्योंकि चाबुक नहीं मारोगे तो वो बैल फिर अपना रास्ता पकड़ लेगा. So you want to cover the, cultivate, every line correctly so the whole field gets tilted. So you have to, तो इसी प्रकार से ये scriptures जो है हम लोग हरदम भूल जाते हैं. I'm not for others, I can say for myself. I've been in Krishna consciousness for 35 years. I also sometimes get upset. I also sometimes forget. I also sometimes think that I am in control. This is what I should be doing, or this is what the way it should happen. But when I go back to, I pick up Prabhupada's books, I start reading again. Krishna is in control. Krishna is in control. Sometimes someone does some mistake. You get very upset. But then when you read Prabhupada's books, then Prabhupada is saying, it's not their fault. It's the fault in the modes they are in. According to the modes, they will behave. So then, what's the idea? We give prasadam, we give holy name, we give good association, we have like good programs, good retreats and all. Otherwise, what happens? When it's a public holiday, everyone wants to go somewhere. Everyone wants to go somewhere. So if there's no devotee engagement, then the people will say, but they will go. This is the nature of the soul, they will go. So then you go, then you say, okay, devotees will say, okay, let's go for a vacation. Okay, let's go to one hotel, spend some time there. That's fine. Then you go there, they say, okay, breakfast is included. So probably we can go for breakfast and we'll just take cereals, we'll just take fruits, But it's the same plate, same kitchen, same people doing everything. And the presentation on the display is very nice, spick and span, it's like just descended from the spiritual world. You just go and have a look at the kitchen. So I'm not saying, I'm not criticizing anyone, but I'm saying, if you don't get back to the books, then these things can draw us. ये चीज हम लोग को खींच लेगा. तो तबे से प्रभुपाद जी बोला, हम लोग the other day श्लोक में पढ़े थे ना, तबे से प्रभुपाद जी बोला कि ये टेम्पल्स का हमारे प्रीचिंग सेंटर्स जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू क्रिएट इनफ एंगेजमेंट्स सो दैट द लिविंग एंटिटी डज नॉट फाइंड अनदर टाइम. क्योंकि जब जहां फ्री टाइम मिलेगा तो हम रियल टेस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अवर फ्री टाइम. व्हाट आर यू डूइंग इन द फ्री टाइम? विद द डिवोटीज इज फाइन. ये हम लोग कौन सी करेगा? भागवतम में बैठे हैं तो भागवतम में सुनेगा. You can't sit here in the Bhagavatam and have your phone and watch a YouTube movie. Netflix पे थोड़ा बैठे बैठे भागवतम क्लास में जाओगे. Netflix पे जाओगे जब अकेले होगे, और जब अकेले Netflix पे होगे तो आप समझ जाओ कि माइंड के स्टेट क्या है. माइंड के स्टेट है मतलब माइंड इज नॉट प्यूरिफाइड, तभी तो Netflix में चला गया. सो इंटेलिजेंट जब डिवोटी होता है, जब डिवोटी सीनियर डिवोटी से गाइडेंस में होते हैं, then the devotee teaches us. Prabhupada teaches us. Prabhupada जी बोला कि 7 purposes Prabhupada लिखा कि क्या बोलते हैं Prabhupada जी? To teach the technique. जो टेक्निक है वो हमको सीखना है. So what are the techniques? The techniques of doing a morning program, the technique of simple living, high thinking, studying books, keeping in the association of devotees. Having the Kantimala is also a technique. Because if you don't have Kantimala, then you just I'm a devotee of the Hare Krishna temple. You don't have the Kantimala. कोई तो देखे नहीं, ये सब चलेगा. Vegetarian चलेगा. नहीं, these are all techniques. You even putting on tilak. Why Prabhupada said put a tilak? Number one, you put tilak, you make your body the temple of Lord Vishnu. Immediately you start realizing this Paramatma in the heart. So getting back here,
Again, the purification, जितना जो purified होगा उतना वो sense gratification से detached होगा. Very simple measurement. हमको अभी भी इंटरेस्ट लगे है ये सब संसार के इंद्रिय भोग के वस्तु, मतलब just work hard on yourself, that's all. निराश नहीं होना है. If you still have interest like that, don't get disappointed. ये तो नेचर है, नेचुरल है. पानी में तो सब भी भीजेंगे, पानी बरसेगा तो सब तो भीजेगा. लेकिन वही है, कोई अगर छोटा छाता लिया है और बौछार पड़े से भिजता है तो get a big umbrella, do something better. So in Krishna consciousness we just have to become better, just assess yourself. These are all you can say Prabhupada's purports are the measurement rulers, measurement tape है. तो इससे हम लोग अपन आपके मेजर करो. हाँ हमें, एंड अगेन इट इज ऑल्सो ग्रेजुअल प्रोसेस. कभी कभी है कोई कोई के अब हमें क्लब जाए में इंटरेस्ट नहीं लगे. पहले रहे हम लोग के हाइबिस्कस फेस्टिवल तो मस्ट गो एवरी डे बिकॉज साल में 1 दफा आए, 7 रोज तो जाना पड़े. बट नाउ डिवोटीज फेस्टिवल कब आइज कब चला गया पता नहीं लगा. सो दैट्स लॉस्ट इंटरेस्ट इन वन थिंग ना. बट देन वी में बताया है मन षष्ठानि इंद्रियानि. You have to deal with 6 senses, 5 gross senses and 1 mind. So even one at a time. Krishna consciousness, one at a time. कभी कभी क्या होता है, इवन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हम लोग सोचेंगे, हम लोग कोई डिवोटी को देखेंगे तो हम सोचेंगे वी सी प्रभु जी, प्रभु जी इज ऑलवेज ऑल द टाइम ऑन द व्यासासन. वी डोंट नो हाउ menial service and everything has given that progress. तब ऐसे डिवोटीज के बायोग्राफी जानो बहुत अच्छा लगे. यू रीड अबाउट ऑल द ग्रेट आचार्यस. Maybe one thing that we should do, I always say, one thing we should do, everyone must read Prabhupada Lilamrita. Then you see how Prabhupada did it. Even Prabhupada's childhood. Prabhupada को बोला कि a lifetime in preparation. The first book of Prabhupada Lilamrita is lifetime in preparation. So Prabhupada was, we all know Prabhupada came from the spiritual world. But again, coming here, it is shown by example how Prabhupada's parents did it, how Prabhupada was a child, his Gaur Mohan they, helped him, made a small miniature Rath Yatra, and then in the Calcutta, Prabhupada did that, and then Prabhupada also wanted everyone to be distributed prasadam, and Prabhupada, so from childhood. So again, we never thought Prabhupada was not the founder Acharya of ISKCON then, but he was still teaching how to raise children in Krishna consciousness. I have children, Jai Chaitanya is about to have. So this is where we learn how to. We all want to learn parenting skills. So we learn the parenting skills from Gaur Mohan Dey. We can learn from them. So it's a whole life. He's the Acharya. Acharya means he who teaches by example. It's very important to read Prabhupada Lilamrita. Read Prabhupada Lilamrita. Read about devotees, how they have, the secret to learn in Krishna consciousness is how a pure devotee has made it. तब से प्रभुपाद जी बोले कभी कभी, in a different context, please don't take me wrong. प्रभुपाद जी कभी कभी बोले ना, that's why बोले if some people come and go, we are not surprised, because that's the nature of the material world. ना वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा. We must be interested in knowing about those who have stayed. How have they stayed here? Because the material nature is all pulling. माया तो एकदम सब बगल प्रेजेंट है, कुछ ढूंढने का काम नहीं है, एकदम तैयार है. नहीं ढूंढो तभी से ऊपर फाट पड़े. कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. बट जो रुका है कृष्णा का, दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, दे आर डूइंग सम सब्सटेंशियल सर्विस करे, सर्विस प्रोग्रेस करे. यू कैन सी डिवोटीज आर बिकमिंग डिटैच्ड, दे आर बिकमिंग मोर सरेंडर. Try and find out the secret how it has happened. So, I take it personally as a very strong point. So, Prabhupada ji bole ki our intelligence is in the present conditioned state of life is impure due to being engaged in sense gratification. क्या है impure intelligence? Because हम all the time muddy कर लेता है, sense gratification से muddy कर लेता है. जैसे with all due respect, it may be a very sensitive, or some people might not even like the discussion, but Prabhupada does mention. Just like sense gratification, a man and a woman, they enjoy the association.
तो प्रभुपाद जी बोले, according to Bhagavatam देखेगा, Prabhupada say, what is this body? This body is gross matter. Just like a gift wrapper, you have a gift, somebody gives you a gift, it's very nicely shiny, silky gift. You open it up, then you find, oh, it's a wedding gift. What is it? Oh, it's a pack of 6 glasses from Roops. Once you open the gift, you become very disappointed. The paper was very shiny. Similarly, our body, our skin color, the texture, the softness is just the shiny cover, shiny coverage. If you open this up, take out the skin, what do you find? Blood, bones, marrow, pus, mucus. This is what it is. This is what it is. Now, if in a very proud bag, right? How many of you have read Prabhupada's book, Truth and Beauty? This very small, thin blue book. Arey Baba, come on. Look for the book. Now everyone go and search for the book. Truth and Beauty. So then you package it very nicely. But what's inside? Stool, pus, mucus, marrow, bone. And I give it to you. Will you embrace it? Will you hold it very close to heart? You say, yuck. But in the conditioned state, we look at the covering, the gift wrapper, and then we just want to hold it very tight. This is what self-gratification is. And very particularly, how people enjoy one another in bodily relationship, just comes to your mind, I'm just holding a bag of stool, pus, bones and marrow. The sadhu will simply want to become Akhanda Brahmachari. don't want to touch any rubbish. That is studying Prabhupada's books is very, this is how detachment comes. We don't study Prabhupada's books, it's no. But we're not sad about the fact that those who have not understood, the whole world doesn't understand. I'm very happy about the fact that there are some spiritual seekers. Some people have started coming to Krishna consciousness. But let's not expect them to overnight change. But the more we keep discussing, the more it becomes meditation. कोई भी बात है, उसके बारे में बोलते 11th canto, the 24 gurus, they give the example of a wasp, how the bilni, she doesn't have her own baby or offspring. So she goes and brings a caterpillar and then keeps, humming in the ears of the caterpillar, and the caterpillar transforms into the bilni, wasp. So Krishna consciousness is like that. We just have to concentrate our mind with Krishna activities, and then we'll attain the nature of Krishna. Says you attain my nature. What is Krishna's nature? Sat, Chit, Ananda and Vigraha also. Means we will have a spiritual form which will be eternal, which will be full of knowledge, and which will be source of blissfulness. And that's why the devotees are Brahma Bhuta Prasanna Atma na Sochati na Kankshati. The devotees are Brahma Bhuta, they are happy. Okay, so we'll stop here now. I think it's 7 o'clock. Any question or comment? Jivnath, any comments you want to make? Okay, so just in essence, how we develop meditation from humble feet of the Lord to the face. So start Krishna consciousness in that way. Always engage in humble service and Krishna will give you progress. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much.